Hello everyone, myself Dr. Maddineni Srinivas, your dermatology faculty from Cerebellum Academy. So along with me, I have Dr. Saima Yesmin, who secured 171 marks in the July 2024 FMG examination. So I just want to ask Dr. Saima Yesmin, how did you approach dermatology and what are the important suggestions which you want to give to your future juniors, seniors, colleagues, whoever are unable to clear the FMG exam. So please, can you briefly tell about dermatology, Dr. Saima Yesmin? Yes, sir. So, hello everyone. Dermatology itself is a very short subject, but a high scoring subject for FMG especially, because we tend to get at least 5 to 6 questions only from dermatology every session in our every FMG exam. If we see the PYQs even, 5 and 6 of them are only from dermatology. Some of are integrated with microbiology also sometimes. So 8 to 10 marks are there, always there. If you have given some time to dermatology, like 2 or 3 days, it will hardly take 2 or 3 days to complete any RR. And sir, we know that RR is more than enough for the FMG preparation for short subjects also and for bigger subjects as well. So शॉर्टर सब्जेक्ट्स के लिए अगर आप जाते हो कि एक आरआर कर लिया आपने, और उसके साथ साथ आपके पास में अगर कोई एक अच्छा मटेरियल हो जिसको आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर पाओ, रिवाइजेबल कंटेंट हो आपके पास में, जैसे कि सर विथ योर पीडीएफ आई फेल दैट कि उसमें स्लाइड्स बहुत ज्यादा थे लेकिन वो रिवाइजेबल थे कहीं ना कहीं। 1 मिनट में आप 3-4 स्लाइड कर सकते हो कि आपको देखना है बस, सारे इमेजेस पिक्चर्स दिए हुए थे तो हमें बस रिलेट करना है। आप वर्ड देखो, साइड में पिक्चर देखो, सारे माइंड में सब कुछ रिवाइंड हो जाता है। तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एट द एंड जब एक फोटोग्राफिक मेमोरी बन जाती है आपको आपके नोट्स की, तो वो चीज बहुत हेल्प करती है। क्योंकि कंफ्यूजिंग टर्म्स है सर, डर्मेटोलॉजी में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत टर्म्स ऐसे हैं जो आपको कंफ्यूज करेंगे कभी ना कभी। और 4 ऑप्शंस जो दिए हुए होते हैं वो लोग जान पूछ के ये सब देते हैं ताकि वो 4 ऑप्शन सिमिलर साउंड करे। धर्मा में हम ऐसे ऊपर से अगर एक ब्रॉड व्यू देखें तो कहीं ना कहीं कि हमें पता है कि पेम्फिगस वाले जो होते हैं डिसऑर्डर, ये वाले होते हैं, बुल्लस वाले ये अलग से आगे। तो ओवरव्यू हमें पता है, लेकिन उसमें भी जब अंदर जाके डीप क्लासिफिकेशन आते हैं और कभी कभार दे देते हैं सर, जो एफएमजी वाले होते हैं, हमारा जो एनवी है वो कभी ना कभी, क्योंकि नीड भी वही सेम कंडक्ट कर रहा है बॉडी, नीट पीजी, तो वही सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस दे देते हैं थोड़ा डीप में पूछ के टफ बनाने के लिए। तो उसको अप्रोच करने के लिए आपको कहीं ना कहीं एक कंसेप्ट बिल्ड करना पड़ेगा, एक अच्छा मटेरियल, एक अच्छा टीचर चूज करके। ऑब्वियसली जो मैंने किया अपने प्रिपरेशन पे, सर थे, और सर का कहीं ना कहीं मुझे हार्डली एक बार मैंने मेन नोट्स रिवाइज किया, देन मैंने मैराथन के साथ में वही, लेकिन सेम मेन नोट्स मेरे रिवाइज थे क्योंकि सर के मैराथन के पीडीएफ भी सेम ही थे। सो मेरे लिए बहुत इजी था कि मैं उसको 2-3 बार गो थ्रू कर पाई बिफोर माय एग्जाम। तो मेरे जो डर्मा के स्ट्राइक रेट थे वो भी मेरे कहीं ना कहीं 90-100% थे, क्योंकि मैं माइक्रो को इंक्लूड करके अगर बोलूं, कुछ जो इंटीग्रेटेड आए थे, दैट विल बी एनफ फॉर डर्माटोलॉजी अगर आप ऐसे अप्रोच लेते हो और आपको कहीं ना कहीं पीवाईक्यूज देखने हैं। सर आपने जब हमें करवाया था, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने मेंशन किया था कि ये इंपॉर्टेंट चीजें है, देन आपने स्टार्ट किया था। तो कहीं ना कहीं वो चीज है कि आपको पहली एक दिमाग पे मतलब टेन टू हम रिमेम्बर वो सारी चीजें होती है कि नहीं सर ने पहले ही इंपॉर्टेंट ये सारी चीजें बोली है। तो एक बार जब आप पढ़ोगे तो इंपॉर्टेंट चीजें तो आपको याद ही रहेगी, नेक्स्ट रिवीजन में जो आपके साइड के एक्स्ट्रा चीजें हैं वो भी याद रहेंगी। जैसे सर मेरे लिए बहुत कंफ्यूजिंग था वो वाले जो एचपीवी के 1, 2 एंड 3 वाले थे, जब आपने निमोनिक दिए थे कि डीएसपी वाला जो आपको है, पिक्चर थे साइड में, वो मैं मतलब अभी भी याद है मुझे वो सारी चीजें, जबकि मैं भूल जाती हूँ, बहुत भुलक्कर हूँ मैं, लेकिन मुझे वो सारी चीजें याद है। और बाकी जो मैंने सर आपको ऑलरेडी बोला है कि डीवस वाला, वो कहीं ना कहीं मेरे लिए बहुत एक फनी
टाइप का वो दिमाग में है कि बेकर्स निवल्स है तो मतलब बेकार बार्बर ने बाल काटा, उसका पिक्चर ही आ जाता है दिमाग में। तो कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट है खासकर डर्मेटोलॉजी के लिए, क्योंकि अगर आपको पिक्चर आता है आंसर आ जाएगा आपको 1 सेकंड में, आपको उसको टाइम नहीं देना है ज्यादा, तो आप दूसरे सब्जेक्ट में दे पाते हो वो टाइम। इसीलिए कहीं ना कहीं ऐसा मत सोचना कि डरमा हम छोड़ के जाएंगे तो कुछ मतलब बहुत बड़ा काम कर लेंगे, कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, डरमा अगर कर लिया आपने तो शायद तक आप अगर 148 149 स्कोर कर रहे हो तो डरमा के हेल्प से आप 150 क्रॉस कर सकते हो, वो चीज है। दैट वाज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। So, just to summarize what Dr. Saima Yasmin told, this is a very highly scoring subject. So, if you take only dermatology per se, 5 to 6 questions, but if you integrate micro, then you can get anywhere up to 10 questions with the integration. That is one thing. And this is a short subject, so you can cover it in 2 to 3 days. Rapid revision, अगर पूरा भी कर देंगे तो भी. And yes, you have made a point about the notes, the PDF, which we share. So you can easily revise that very, very quickly. And also you should build a photographic memory, which is going to be very easy with the notes of dermatology because we are having images and also the notes side by side. So just see the image, read the notes, and building the photographic memory is very crucial to all the students. I want to tell this. So don't try to read from various sources. Okay, Dr. Saima, I hope you will also agree with me. Will FOMO help the students or will it cause more damage to the students? That is fear of missing out. No. Which students Yes, yes, they sir. go to all the sources, they will collect, they will keep on collecting all the sources, and at the end they feel very difficult to revise. So, what is your take on this, Dr. Saima? सर आई वांट टू सजेस्ट दैट डोंट बी इन फोमो, बिकॉज अगर आपने एक फैकल्टी को चूज किया है, सारी फैकल्टीज कहीं ना कहीं बेस्ट है सर, इसीलिए वो इन सब प्लेटफॉर्म्स में है, क्योंकि प्लेटफॉर्म जो होते हैं बेस्ट को ही चूज करते हैं। तो आपको वो टेंशन नहीं लेना है कि ये वाली फैकल्टी मतलब बेस्ट होगी कि नहीं, आपको ये टेंशन लेना है कि आप उस फैकल्टी के साथ में अपना जो है तालमेल मिला पाते हो कि नहीं। Hmm. आप अगर एडजस्ट हो जाते हो तो आपको क्या जरूरत है कि 2-4 जगह से और मटेरियल कलेक्ट करो, पीडीएफ जो इतना इजीली अवेलेबल होता है। जो कोर चीजें कहीं ना कहीं होती है सारे टीचर्स सेम ही पढ़ाते हैं, तो आप अगर एक सोर्स पे हो ना कहीं, उसी को स्टिक करो और उसी को एट द एंड एटलीस्ट 3-4 टाइम्स रिवाइज करने की कोशिश करो। फोटोग्राफिक मेमोरी उसी से ही बनेगी, एक सोर्स मल्टीपल रिविजन। Very true, Dr. Simon. So, whoever, like whichever faculty you are in the frequency, you are vibing with that faculty. So, go till the end of the till the exam day with that faculty only. Trust the notes. So, 10% or something may be different from this note and that notes, but don't try to jump from this boat to that boat while you are traveling. So if you do that, what will happen? You are going to fall and you are going to drown. So only travel with one faculty, whoever it is. Okay, trust that and continue your concept building. Do not go into FOMO. So thank you so much for all the valuable insights, Dr. Simon Asman. And I'm very, very happy that my dermatology lectures were actually very helpful for you to answer the question. So I think some 10 questions came and this FMG, and like you told with the strike rate, almost you are confident that you have marked 90 to 100% of the dermatology questions, Yes, right? So sir. I'm very happy for being a part of your preparation. And this is what makes Thank you so much, sir. the faculty very happy, the happiness of the students and the success of the students. Yes, sir. Thank you so much for guiding us, sir. The main important thing was कि शॉर्ट सब्जेक्ट्स को लोग देख तो लेते हैं क्योंकि इनका Hmm. रहता है कि अरे एट द एंड पढ़ लेंगे हो जाएगा, लेकिन नहीं Hmm. होता है। इंटीग्रेटेड चीजें रहती है, आपको एक बार तो अच्छे से पढ़ना होता है। तो इसीलिए Yes. सजेस्ट करूंगी कि एक बार अच्छे से ही पढ़ लो, फिर जाओ आप लोग रिवीजन की तरफ, कहीं ना कहीं वो बेटर रहेगा। थैंक यू सो मच सर फॉर Absolutely. हैविंग मी।
Absolutely true. It was आपने जो बात so बोली, nice to talk with you. thank you so much. The pleasure is mine. And yeah, just continue the same preparation for the NEET. Again, we are going to meet in the interview for the NEET exam as well after one more year. So all the very best and Yes, sir. lots of wishes. God bless you, Dr. Saima Yesmin. Just Thank you so focus, much, never sir. give up, never give up. All the very best. Thank you so much, sir. Take So care, thank sir. you so much, all the students. So I hope you got some valuable insights. Do apply all these points, valuable insights which you got from this video. Apply them. Don't just watch this video and go back again, do scrolling the Instagram or watching the shorts. Apply these points. You are going to achieve the success. Trust me. Bye bye. Thank you so much. Happy learning.